आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कब कहेंगे? जब हमारे पास कोई वेरिएबल है z और वी नो दैट कि z की वैल्यू क्या होती है x प्लस आयोटा वाई, और x और y क्या होते हैं? हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ z क्या हो गया? e रेज टू पावर x प्लस आयोटा वाई, और e रेज टू पावर x प्लस आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं? e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर आयोटा वाई। ये कैसे हुआ? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंशियल। अगर a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर m है तो इसकी पावर्स क्या हो जाती है? हमारी ऐड हो जाती है। अगर ऐड है तो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो e रेज टू पावर x प्लस आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर आयोटा वाई। नाउ वी नो दैट कि जो हमारे पास ई आयोटा थीटा है बाय यूजिंग द Euler's formula। तो Euler's formula क्या होता है? इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज e raised to power iota theta is cos theta plus iota sin theta. So it means we can write this one as e raised to power x, and e iota y becomes your cos y plus iota sin y. Or we can say e raised to power x cos y plus iota e raised to power x sin y। तो हमारे पास ये जो टर्म है दिस एंड दिस बिकम्स योर रियल पार्ट, and this one becomes your imaginary part. So that is the definition of exponential function. Now if x becomes 0, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ z की वैल्यू क्या बनेगी? e रेज टू पावर iota y, e raised to power iota y. So we can say e iota y is equals to cos y plus iota sin y, or we can say this one is your cis y, or we can say this one is a cis y. Now, if we change iota by minus of iota, so what we are having? E raised to power minus iota y is equals to, now it becomes your cos y minus iota sin y, or we can say it becomes your cis minus y. नाउ e रेज टू पावर z क्या होता है? हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होता है, और z क्या है? अगर हम कहें e रेज टू पावर z और z, whatever you want to pronounce it, is a periodic function where z is a complex variable. अब z की वैल्यू क्या है हमारे पास? we know that z is equals to x plus iota y. Z is equals to x plus iota y. So exponential of z becomes your e raised to power x plus iota y, or we can say e raised to power x as cis y, cis y. Or we know that e raised to power x, cos and y both are periodic in nature, means we can say cos 2n pi plus y plus iota sine 2n pi plus y. Or we can say this becomes your e raised to power x. Now it becomes your cis 2n pi plus y, or we can say e raised to power x into e raised to power, that is iota 2n pi plus y. Or we can say e raised to power 2n pi iota plus x plus iota y, or it becomes e raised to power 2n pi iota plus z. So we take as e raised to power z, हमने e raised to power z लेके चले थे, and we prove that is equals to e raised to power 2n pi iota plus z. It means it remains unchanged when z is increases by any multiple of 2 pi iota. So that's all about this exponential. Now let us take one example. So how to split into real and imaginary part? So if we want to split into real and imaginary part of e raised to power 5 plus 3 iota whole square. Now we know that
a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab, so it becomes 5 square plus 3 iota square plus 2 into a into b. So we get as 25 plus 9 iota square plus 5 2s are 10, 10 into 3, 30 iota, or it becomes e raised to power 25 minus 9 plus 30 iota, or 25 minus 9 becomes your 16. So e raised to power 16 plus 30 आयोटा. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 30 आयोटा, नहीं 30 आयोटा नहीं है, वी आर गोइंग टू राइट इट एज e raised to power 16 into e raised to power 30 आयोटा, मींस आयोटा थीटा आयुलर फार्मूला लग गया. तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास cos थीटा, एंड थीटा इज हियर 30, सो cos 30 plus iota sine 30, and we can write it as e raised to power 16 cos 30 plus iota e raised to power 16 sine 30. Now its real part is e raised to power 16 cos 30, and imaginary part is here, that is e raised to power 16 sine 30. So all about this topic. Thank you so much. If you like it, then subscribe my channel. Goodbye and take care.